Hello friends, welcome to my channel called IVD Manufacturing. Today I have brought lecture number 10, which is applicable fee of WHO PQ. So दोस्तों, there are mainly three types of fees which manufacturer usually pay to the WHO PQ team, right? So first fees क्या है? It is assessment fees. So दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, कोई भी अगर मैन्युफैक्चर जब वो WHO PQ के लिए अप्लाई करता है तो वो एक पहले स्टेज में प्री सबमिशन फॉर्म सबमिट करता है. सो व्हाट हैपेंस when WHO PQ they will scrutiny this document in terms of the whatever the information which the manufacturer has provided to it. Let's say for example, if this pre-submission form is accepted by WHO PQ team, then ये जो मैन्युफैक्चरर है ये एलिजिबल हो जाता है टू पार्टिसिपेट इन द WHO PQ फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेजेस. सो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को 5000 USD मींस $5,000 पे करना पड़ता है फॉर डोजियर स्क्रीनिंग, राइट? फॉलोड बाय पेइंग अ फी ऑफ $12,000 फॉर द प्रोडक्ट असेसमेंट. तो दोस्तों ये मेरा पहला असेसमेंट फीस था. अब लेट्स से कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को अगर PQ मिल गया है, लेट्स से देयर प्रोडक्ट और देयर द मैन्युफैक्चरर हैव बीन PQ लिस्टेड. सो ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि जब भी मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट का जब लेता है डिजाइन, सो देयर आर चांसेस कि वो डिजाइन में कुछ चेंजेस करे, वेदर द चेंजेस कुड बी अ मेजर और द माइनर. तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, उनको दोबारा WHO PQ टीम को इंटीमेशन देना है, क्योंकि या तो वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस कर रहा है, लेट्स से कुछ IFU में चेंजेस किया या कुछ बॉक्सेस पे चेंजेस किया एंड सो मेनी मोर. उस समय क्या होता है, दिस मैन्युफैक्चरर दे नीड टू पे $3,000 टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट वंस अगेन. तो पहले हमने बात कर लिया असेसमेंट फीस, सेकंड वाज द चेंज असेसमेंट फीस एंड द थर्ड टाइप ऑफ फीस इज द एनुअल फी. सो माय फ्रेंड्स, क्या होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरर जब वो WHO PQ लिस्टेड होता है तो दिस WHO they will display the product onto their website. So वो एक annual fee होता है जो एक minimum होता है. I mean, manufacturer they pay $4,000 per year. Whenever until this PQ has been listed, right? So आपको ये ध्यान में देखना है कि ये जो फीस है आपको you need to keep in your mind before you go with the WHO PQ, because you need to check whether you have those kind of financial or not. So I hope you guys have much enjoyed my today's lecture. Please do like, share, comment and subscribe my channel. Take care.